We are going to start the Hindu 5th July 2021 news analysis. So now let's go to the news articles. First article is that it's raining fish. फिर उसके बाद at least 45 killed in military plane crash in Philippines. Zico runs Olympic torch relay. ठीक है. फिर फोर्थ आर्टिकल इज अबाउट द पुष्कर धामी सोन इन द पुष्कर धामी सोन इन द उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर. फिफ्थ आर्टिकल इज अबाउट द प्रॉब्लम नाउ विथ मिलिट्री सिनर्जी प्लान्स. फिर सिक्स्थ आर्टिकल इज अबाउट द लिटरेसी न्यूमेरेसी mission's deadline pushed into 2027. Literacy numeracy mission deadline pushed to 2027. Seventh article is about mixed bag. Eighth article is about NGT push up government agency over the inactions on a lake encroachment. Ninth about the High Court urged mercy state transfer of HIV positive PSF jawan. 10th article is about the state police foray into the UAV. फिर लास्ट में we will discuss the prelim practice question and mains practice question. So let's get started. So the first article is about that raining fishes. So paddy fish systems, an integrated rice field or the rice field and pond complex. Fish are grown concurrently or alternatively with rice. See, rice and fish both are grown like simultaneously. Okay. Fish deliberately introduce fish may enter field naturally from surrounding waters when flood occurs, mix or both, allow the production of fish and other aquatic animal from the same rice field area without causing reduction in the rice yield. Advantage: readily available paddy field can be utilized, can serve as an off-season occupation for farms. Fish serves as an excellent agent for integrated pest management. Fish increase soil productivity and boost the production of paddy, boost productivities and income from unit area. ये कौन करता है? तो ये रब्बा ट्राइब्स है जो कि असम में रहता है. ठीक है. शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ इंडिया है. मेनली इनहेबिट असम एंड वेस्ट बंगाल. लिव इन अ स्मॉल आइसोलेटेड ग्रुप कॉमनली कॉल्ड रब्बा बस्ती. सो इंडिया जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस hemoglobin variants is found in the high incidence among the rubber tribes. hemoglobin ज़्यादा पाया जाता है इन लोग में. ठीक है. तो एक क्वेश्चन देख लो. rubber tribes was commonly seen in the news inhabit which of the following area? So they mainly inhabit the Assams. So at least 45 killed in a military plane crash in Philippines. So Philippines, one of the world largest archipelago nations, situated in the Southeast Asia in the Western Pacific Oceans. Three main geographical area जो कि लुजोन है. ठीक है. फिर उसके बाद विसाया है और
मिंडानो मिंडानोज है, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ ओवर 7,000 आइलैंड्स, टू लार्ज आइलैंड्स आर लुजोन्स एंड मिंडानोज make up two-thirds of the total land area. Okay, only about one-third of the islands are inhabited. बाकी only one-third of the islands are inhabited. ठीक है। फिलीपींस जो कि although about 50 volcano more than 10 are known to be active, Mount Pinatubo in 1991 saw world largest volcano eruptions in 20th century. Climate tropical and strongly monsoonal climate होता है, ठीक है। Then surrounded by the South China Sea to the west and Philippine Sea to the east. South China Sea armed to the Pacific Oceans, bounded on the northeast Taiwan Strait on the east, Philippines on the southeast, and the south coast of the Malay Peninsula. On the west and the north, the Asian mainland, partial Spratly Islands and Scarborough, Shoal, South China Sea. 9 dash lines in the South China Sea as well. So see partially and partial island, फिर उसके बाद Scarborough, Shoal Island, फिर Spratly Island, ठीक है, ऐसा है क्रमशः। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो। अरेंज द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फीचर फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। ताइवान, जापान, साउथ चाइना सी, इंडोनेशिया। तो पहले जापान आता है, फिर ताइवान स्टेट आता है, फिर साउथ चाइना सी आता है, फिर उसके बाद इंडोनेशिया आता है, यानी कि 2 1 3 4। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द जीको रन्स ओलंपिक टॉर्च रिले इन इबराकी, ठीक है। सो ओलंपिक गेम इंटरनेशनल स्पोर्ट फेस्टिवल है, ठीक है। हेल्ड वंस इन एवरी 4 years, 4 साल पर एक बार होता है, ठीक है। समर गेम्स एंड विंटर गेम्स आर हेल्ड सेपरेटली। हिस्ट्री क्या है कि 2300 years ओल्ड ओलंपिक गेम्स, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम इन 1896 एट एथेंस में खेला गया, 1896 में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट, entrust the hostings a city elected by the IOC session, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एक सिटी को इलेक्ट करता, ना कि एक नेशन को, ठीक है। ओलंपिक टॉर्च रिले, मॉडर्न इन्वेंशन, practice from ancient Greece, start of the Olympic Games, transmit a message of peace and friendship, first used in 1936 Berlin Summer Olympic. Modern torch resist of effect of wind and rain. Torch unique design that represent the host countries and the spirit of the game. पुष्कर दामी सोन इन एज उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर जो कि गवर्नर इज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, चीफ मिनिस्टर इज a real executive authority. Governor is head of the state. Chief Minister is head of the government. Appointment of the Chief Minister, जो कि आर्टिकल 164 में लिखा हुआ, आर्टिकल 164 में लिखा हुआ फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, 64 में।
does not contain any specific procedure के बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन कि आर्टिकल 164 में लिखा हुआ कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, लेकिन प्रोसीजर कैसे अपॉइंटमेंट होना ही चाहिए, ये सब चीज़ नहीं लिखा हुआ है. चीफ मिनिस्टर shall be appointed by the governor. Convention of a parliamentary system. Governor has to appoint a leader of the majority party in the state legislative assembly. No party clear majority. Governor discretion in such a situation. The governor usually appoint the leader of the largest party or the coalition seek of the vote of confidence within the month. The constitution does not require the person must prove his majority. The governor may first appoint him that then ask him to prove his majority within the reasonable period. Person who is not a member can be appointed as a chief minister for the 6 month. Tenure क्या है कि theoretically chief minister holds office during the pleasure of the governor. Chief minister remain in the office as long as the continue to be the leader of a majority. Governor can dismiss him lost his majority support. The state legislative assembly can be removed him by passing the vote of no confidence against him. तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. बिल्कुल सही है, कोई भी प्रोसीजर ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर शुड बी द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट. नहीं, 6 मंथ के मतलब कि मैं अगर लेजिस्लेचर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हटना पड़ेगा. ठीक है. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ओनली वन करेक्ट है, यानी कि ए आंसर हो जाएगा. फिर नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट द प्रॉब्लम नाउ विद द मिलिट्री सिनर्जी प्लान. इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है. अंडर द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ दिस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. देन सिक्योरिटी challenges various security forces and the agency and their mandates. Integrated threat command, a unified command under all the resources of the army, the navy and the air force are put together. Reason for the objection from the Indian Air Force. Air power is being seen as supplementary to the two surface force. The Air Force is worried being divided into the smaller unit degraded the effectiveness of the air operations. Suggestion there बोल रहा है कि India does not have a clear articulated national security strategy. Ensure conduct of coordinated operations and communications. Otherwise, duplications of the efforts, wasting of resources. National security strategies, trust among the various defense forces. Requirements of effective communications and sharing of information. 1999 Kargil war incidents. Lack of communication to the Indian Air Force. Indian Air Force left alone while carrying out military operations. Then in जीएस पेपर 2 में मेंस क्वेश्चन पूछ सकता है कि एज पार्ट ऑफ द डिफेंस रिफॉर्म्स आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द फॉर्मेशन ऑफ integrated threat command.
फिर नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट द लिटरेसी न्यूमरेसी मिशंस डेडलाइन पुश टू 2027. So international national initiatives for proficiency in reading with understanding and numeracies under the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education. Important steps for implementations of the National Education Policies 2020. Vision क्या है कि to create an enabling environments to ensure the universal acquisitions of the foundational literacy and numeracy, to ensure that every child achieves the desired learning competitions in the readings, writing and numeracy by the end of grade 3 to be achieved by 2026-2027 under the aegis of the central sponsor schemes of समग्र शिक्षा के अंतर्गत में 5 tier implications mechanisms at the national state district block school. ठीक है, national state district block school levels of all the states and union territories. It may emphasize goal setting and accountability for the state government. Guidelines for teaching, training, assessments and the creation of printed resources. NEP 2020 achieve universal foundational literacy and numeracy in primary schools by 2025. Target postponed due to academic disruptions caused by the COVID-19. Then one question, prelim question. Consider the following statement regarding the Nipun Bharat Mission. ठीक है. It aims to create an enabling environment to ensure the universal acquisition of foundational literacy and numeracy by 2027. ठीक है. फिर it will be implemented by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education. बिल्कुल सही है, सेकेंड वाला बिल्कुल सही है, तो बी आंसर हो जाएगा. करेक्ट पूछ रहा है, बी आंसर हो जाएगा. देन नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट द मिक्स्ड बैग. इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पत्री में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट मिक्स्ड बैग. ठीक है, तो आर्टिकल्स है क्या कि हायर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स $95 बिलियंस अचीव इन Q1 ऑफ 2021-2022. फैक्टर क्या है कि फैक्टर्स क्या है, सेक्टर स्पेसिफिक intervention involvements of all the stakeholders and functioning of the government as a whole. Simplifications of procedure, extensions of timeline and license etc. Rising vaccinations coverage and economic recovery in the key developed market boosters demands from India. India versus major economic. India showcased the robust exports performance in April 2020. India received a highest ever FDI inflow in 2020-2021 USD of 81.72 billions. How to achieve the target of USD 400 billion merchandise export by 2021-2022? Reason for present jump in export: accelerated reopening of major economics. Way forward, what is the way forward to restoring health of every constituent sectors, reforms of crucial job gathering and job generating export sectors, ready-mades, garments, leather and leather products, एंटी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है. ठीक है,
फिर reflects the deeper structural problem in their sectors. अब इससे रिलेटेड जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन ऑर्डर टू अचीव द इंडियन एम्बिशियस टारगेट्स टू अचीव द 400 बिलियन मर्चेंडाइज exports in 2021-2022, restoring health of every constituent economic sector is a must. Elaborates. अब नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट द एनजीटी pulls up government agency over the inactions on the lake encroachment. So NGT and National Green Tribunals established in 2000 established under the National Green Tribunals Act 2010's purpose for the effective and expeditious expeditious disposal of the cases related to the environmental protection, conservation of the forest, other natural resources, matter relating to the enforcement of any legal right relating to the environment, giving relief and compensations for damage to the persons and properties. Composition. What is the composition? Composition is that sanctioned strength of NGT, 10 expert members and 10 judicial members, chairman of the NGT, administrative head of the tribunal, who also serve as a judicial member of it. Eligibility is condition. What is eligibility condition? Office of the chairman, a person should be a service or the retired Chief Justice of the High Courts or the judges of the Supreme Court of India. Member of NGT, who are the member of the NGT, choose by the elections committees headed by the sitting judge of the Supreme Court of the India. So facts क्या है? The tribunal is not bounded by the procedures laid down under the code of the civil procedures. It guided by the principle of natural justice. ठीक है? Mandates to dispose of applications or appeals within the 6 month of the filing. मतलब 6 month में ही filing करने के बाद इसको disposal कर देना है, मतलब कि उसको निपटारा कर देना है. The tribunal's dedicated jurisdiction in the environmental matters provides speedy environmental justice, help to reduce the burdens of litigations in the high court. ठीक है, ये भी करता है कि litigation in the high court को burden को reduce करता है. अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो तो प्रीलिम में कि National Green Tribunal has jurisdiction over which of the following act? तो the Air Prevention and Control Pollution Act of 1981, the Water Act पर भी करता है. ठीक है, the Environmental Act of 1986 पर भी करता है. ठीक है, फिर उसके बाद Public Liability Insurance Act 1991 पर भी करता है. ठीक है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 पर भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जुरिस्डिक्शन होता है. ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 4 हो जाएगा सारा. पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991. फिर नेक्स्ट आर्टिकल्स अबाउट द हाई कोर्ट अर्ज मर्सी स्टेट ट्रांसफर ऑफ द HIV पॉजिटिव BSF जवान. ठीक है, then next article about a state police force into the UAV फोर्डनेस. अब वही प्रीलिम का प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर. बिल्कुल सही है. चीफ मिनिस्टर शुड बी द मेंबर, नहीं शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ द एनी लेजिस्लेचर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, बट ही हैव टू टेक द मेंबर विद इन द 6 मंथ. ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा. अब रबर ट्राइब आसाम में पाया जाता है. ठीक है, और पहला जापान होता है, फिर तवाइन स्टेट, फिर ताइवान स्टेट, फिर उसके बाद साउथ चाइना सी, फिर इंडोनेशिया सी आंसर हो जाएगा.
फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स का जुरिडिक्शन होता है ओवर द एयर एक्ट 1981, जो कि प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन के बारे में बताता है। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, देन पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पर नहीं रहता है कोई भी जोड़, ठीक है। और मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना ट्राइब में, उस पर भी नहीं इसका जोड़ होता है एनजीटी का, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द निपुण भारत मिशन, जिसके तहत में 2027 तक में मतलब कि टारगेट किया गया है कि इनेबल द इन्वायरमेंट टू इंश्योर द यूनिवर्सल एक्विजिशंस ऑफ द फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय 2027, ठीक है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल सही है। 2B आंसर हो जाएगा। फिर मेंस का 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जीएस पेपर 2 के लिए कि एज पार्ट ऑफ द डिफेंस रिफॉर्म्स आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, द गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एवेल्यूएटर। फिर जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन हो जाएगा कि इन ऑर्डर टू अचीव द इंडियन एम्बिशियस टारगेट ऑफ अचीविंग USD 400 बिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स in 2021-2022, restoring the health and every consistency economic sectors is the most elaborate, ठीक है। Please like, subscribe and share the video. Thank you very much. Bye.